Well, so we are starting off with current electricity, and whatever we'll be doing today, it is basically class 10 stuff. So all of you know all the basics. We'll just quickly go through and see what is new to learn. Mostly we'll not be learning anything new today because যেগুলো পুরনো সেগুলোই আমরা পুরোটা ভালোভাবে জানি না, সেগুলো একটু রিক্যাপ করে নিই and then we'll go for क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया है पढ़े class 10 whatever we did in class 10 अरे वाह I is equal to Q by T very good the first formula for current electricity अंतर का क्या होगा नहीं पाएगा let's write this down first thing is electric current is what by definition electric current is the rate of flow of charge clear rate of flow of charge so I average means average current can be simply written as the total amount of charge that has crossed over divided by time average current is what is average current the total amount of charge that crossed over a particular point divided by time so that's the average current but you know calculus a lot of it so average current के जगह में सिर्फ I अगर लिखते हैं हम लोग so we should be writing it as dq/dt so why because it's instantaneous current and you know instantaneous values we don't any longer say them instantaneous we just say current is equal to rate of flow of charge dq/dt all right so these are the basic definitions now as I told you I won't be doing anything new just a small new definition that is current जो है वो scalar quantity है या vector quantity है you all know this right but there is a quantity related to current which is a vector quantity we call it current density current density is a vector quantity current density is defined as current density is denoted by J okay which is defined as I by A I is the current and A is the area of cross section A is the area of cross section of the conductor area of cross section of the conductor normal to the current normal to the current direction okay and of course J is a vector quantity not a J cap just write J vector okay not J cap because you know what is J cap J cap क्या होता है y axis का direction में एक unit vector इसलिए J cap नहीं लिखेंगे J vector लिखेंगे is the current density vector so remember current is not a vector quantity but current density is a vector quantity somehow it is related to some vectors I current है obviously हाँ I is current this is current ठीक है वो अच्छा सब जगह में capital I लिखा मैंने right so you can write it capital I doesn't matter you can write it in capital I is the current and A is the area of cross section is that clear right so these are some basics now not delaying there is a small concept I need to tell you till we were doing current electrostatics means charges at rest this basic phenomena you need to understand very carefully current is what it is rate of flow of charge why would it flow हाँ तो electrons है होने दो तो उसको flow करना पड़ेगा ऐसा जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तब फ्लो करता है क्यों पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा क्या कर लेता है कि वो
चार्ज फ्लो करने लग जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर भी होता है तो वहां पर क्या होना जरूरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। क्या बोल दो? गुड। So this is a very basic concept. You need to grasp this very rigidly. If there is a electric potential difference between any two points, there has to be a electric field out there. And what does electric field do to the charges? They start flowing in the direction of. What does electric field do to the charges in general? Conductor के लिए meaning बोलो। अरे हाँ, force apply करता है। What does electric field do to the charges? They apply force, right? If you place a charge in an electric field, সে force apply করা তো। তাহলে যদি একটা free charge থাকে, তাহলে কি চুপচাপ বসে থাকবে force apply করার পর? No, it will start moving. That is exactly what happens in a current electricity. So, whenever you apply the potential difference, it creates an electric field throughout the conductor. पूरे conductor through दिया, an electric field create ठीक है? And that electric field forces the charge particles to move in a specific direction, and that creates the what? Current. So, what is basically necessary for current to flow through a conductor? A potential difference, right? ये हम लोग class 10 में पढ़े थे कि potential difference जरूरी है, लेकिन अभी समझ में आया कि क्यों जरूरी है? क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्रिएट करता है जिसके कारण वो मूव करता है। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट? सो दिस इज द रीजन फॉर फ्लो ऑफ करंट। कहीं पर भी कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, द रीजन इज पोटेंशियल डिफरेंस। राइट दिस डाउन। Potential difference across the ends of a conductor. Potential difference across the ends of a conductor. Across the ends of a conductor is the reason. Is the reason for flow of current. Is the reason for flow of current through it. Okay? So, what is the basic concept? Potential difference, or you know, we just introduce ourselves for last few classes. A name for potential difference. What is it? Voltage. Thank you. It's voltage. Potential difference or voltage creates an electric field. Okay? Then what happens? Electric field applies force on free charges. Charges move to reduce current. Okay? These are the basic steps. Clear to all of you? Yes or no? Well, now let's go back to class 11 again. Sorry, class 10 again. क्या पढ़े थे हम लोग? Well, now Ohm's law. What does Ohm's law state? What does the Ohm's law state? वो क्या होता है? तो एक फॉर्मूला है। Ohm's law बोलता क्या है? बताता क्या है? Actually Ohm's law उल्टा बोलता है। उल्टा वो बोलता है कि current जो है, it is directly proportional to the potential difference, because potential difference is the reason and current is in the effect. Okay? That is a problem. You know, we know a lot of stuff. हम लोगों को ना बहुत सारा चीज पता है, लेकिन वो सही से पता नहीं है. This is very important. Okay? अगर हम लोगों को जितना भी हम लोग, this is a very important theory for the perspective of your life. कम पता हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा पता होना चाहिए. जो भी चीज पता है वो पूरा पता होना चाहिए. ऐसे पता होना चाहिए कि तुम किसी को भी विथ
फुल कॉन्फिडेंस सिखा सको। ठीक है, सब कुछ पता है लेकिन कुछ पता नहीं है, ये बहुत डेंजरस बात है, इज अ वेरी डेंजरस। ठीक है, पता करो, जितना पता हो तुमको वो बहुत अच्छे से पता करो, एकदम टू द रूट। क्यों 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 पूछते जाओ, जितना जब तक तुमको क्यों का आंसर मिलता है क्वेश्चन पूछते जाओ, तभी तुम एकदम रूट तक पहुंच पाओगे। एग्जैक्टली। सो इट इज एक्चुअली वी राइट v इक्वल टू आई आर, हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू आई आर, और बहुत जगह में लिखते भी है v इज प्रोपोर्शनल टू i, बट एक्चुअली द रीजन इज अदर वे अराउंड, i इज प्रोपोर्शनल टू v। हाँ, हम लोग मैथमेटिकली उल्टा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज नॉट मैथमेटिक्स क्लास, राइट? Well, so Ohm's law says that current flowing through any conductor is directly proportional to the voltage. मतलब जितना वोल्टेज ज्यादा डालेंगे हम लोग, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डालेंगे, उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग करंट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, so this was a very simple experiment. We applied higher potential difference and measured the amount of current, and he found it. Now obviously हर एक प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, so यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, so ultimate current as I is proportional to V, V is the voltage, so that implies I is equal to some constant in the voltage होना चाहिए, right? No, I is not equal to V, V is equal to I, so I is equal to conductance, ठीक है, some constant K, this K is called conductance. This K is called conductance. ठीक है, and K is reciprocal of resistance. So इसीलिए I equal to I by 1 by R into V होता है, which gives us V equal to I into R. ठीक है, so the Ohm's law says potential difference equal to हम लोग सब समय V equal to IR, V equal to IR लिखते हैं। So there's a lot of misconception that we carry all through our learning periods, ठीक है? But whenever you are learning anything new, ask yourself questions. When you ask questions, you get to have some answers, you get to understand them properly, ठीक है? क्लास 11-12 में हम जितना फिजिक्स ना सीखे थे, उसके बाद वाला जो 4 साल है जब हम पढ़ाना शुरू किया, तब हम बहुत ज्यादा फिजिक्स सीखे। क्यों? क्योंकि हम खुद से जितना क्वेश्चन ना पूछते थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स पूछते थे हमसे, ठीक है? हर एक क्वेश्चन का आंसर हमको वही इंस्टेंट पे पता नहीं होता था, बहुत सोच के समझ के फिर हमको समझाना पड़ता था। सो दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, द 4 years of the first 4 years of my teaching. So it's a very good thing to teach whatever you have learned. इसको सिखाने की कोशिश करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें से सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है, जितना तुम खुद से पढ़ के नहीं सीखते। Anyhow, V is equal to IR is the basic rule of Ohm's law, and R is what? R is what? It is resistance. ठीक है? फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है, AJV potential difference, এটা R এর সঙ্গে directly proportional না inversely proportional? হ্যাঁ, মানে ইকুয়েশনটা দেখে কি মনে হচ্ছে? V should be directly proportional to R or inversely proportional to R? Other way around, if I ask R is directly proportional to V or inversely proportional to V? মাথায় প্রচুর বুদ্ধি আছে, পড়াশোনাটা কেন করিস না বলতে পারবি? কেন পড়াশোনা করিস না? What is R? R is a constant of proportionality. R came out from constant of proportionality. ठीक है, ना तो वो V पे डिपेंड करता है, ना तो वो I पे डिपेंड करता है, वो करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो किस पे डिपेंड करता है? You know this? अरे वाह, राइट। सो ओम्स लॉ हो गया है। अब हम थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस आर
is directly proportional to L by A, right? We all know this. L is the what? Length, and A is the area of cross section. And the constant of proportionality is a material property. It depends on what? Resistivity or specific resistance. Resistivity or specific resistance. It is a material property. It depends on material. You are taking up iron, copper, platinum, whatever you are taking, the resistivity will be different. Okay. So there are definitions of resistivity. These things you can just go through the your texts और ये assignment वहाँ पर सब दिए हुए हैं कि किसका definition क्या है. We define resistivity as the resistance offered by a conductor of unit cross section area, unit length और unit cross section area जितना resistance produce करता है, that is called the resistivity. Is that clear? So resistance of a conductor ये मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोड़ के और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है. डू यू नो इसके ऊपर? अरे वाह, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर ये जो रो है ना वो डिपेंड करता है. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. कुछ इन जनरल मेटल्स के लिए, मेटेलिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर बढ़ा ले रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, टेम्परेचर कम ले रेजिस्टिविटी विल decrease, right? But there is something called carbon resistors. Carbon resistors में टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टिविटी कम हो जाता है और टेम्परेचर घटाने से उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है. So we say that they have got negative coefficient of resistance. नहीं, वो कार्बन रेजिस्टर वो नॉर्मल रेजिस्टर ही होता है, लेकिन कलर कोडिंग इज समथिंग रिलेटेड टू रेजिस्टर्स ओनली. फिर भी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे. So for the just know this that the resistivity is directly proportional to temperature. Is dependent on temperature. Directly proportional लिखा जाता नहीं. Is dependent on temperature. Dependent on temperature. ठीक है? क्योंकि वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है. अब ये जो डिपेंडेंसी होता है ना, ये हम लोग जो थर्मल एक्सपेंशन में पढ़े थे ना, जो फॉर्मूला थर्मल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है, इट डिपेंड्स सिमिलरली ऑन द रेजिस्टेंस. सो व्हाट वी से रो इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा और सिंपली अल्फा टी. ठीक है सर, वेयर रो इज rho is resistivity at T degree Celsius. Rho naught is resistivity at 0 degree Celsius, and T is the temperature in degree Celsius, and alpha is the thermal coefficient of resistance. Thermal coefficient of resistance. Well, so how did we know resistance is directly proportional to length? It's very simple. As the length increases, the electrons face more difficulty to travel more distance. The same thing happens to us. We travel more distances, we become more tired, right? So what happens? Area of cross section के साथ वो inversely proportional ऐसा क्यों है? Area of cross section बढ़ाएंगे, then electrons will not इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएगा. हाँ, तो ज्यादा अपोज नहीं करेगा, मतलब ज्यादा इजीली मूव कर पाएगा. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एक नैरो रोड से भाग के जाना इजी है या वाइड रोड से भाग के जाना इजी है? ऑब्वियसली वाइड रोड से भाग के जाना इजी है. सो इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? क्यों कि रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ता है? क्वेश्चन टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो उससे प्रॉब्लम क्या है? एक्साइटेड हो जाते हैं तो ज्यादा इजीली मूव करके चला जाएगा ना। हाँ, सो क्या होता है कि अगर तुमको एक स्टैटिक भीड़ के अंदर से भाग के जाना है और एक डायनामिक भीड़ के अंदर से भाग के जाना है, किसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगा? डायनामिक भीड़ के अंदर से। वो सब लोग मूव करता रहेगा तो डॉजिंग देम विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो हाँ ডাইনামিক, রাইট, ডাইনামিক অবভিয়াসলি সেখানে সবাই মুভমেন্ট যদি করতে থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে না তোমায় কোথা দিয়ে যেতে হবে, সেখানে অবভিয়াসলি collision chances বেশি হবে and that will increase the resistance. Well, now we all know this, all the stuff regarding the basics. Let's get over with this.